सी अगेन आप बाहर बहुत ज़्यादा देख रहे हो, लाइक यू सेड विल बी लेसर हर्ट, बट मतलब सी इट्स ऑल विद इन यू, राइट? अपने एनर्जीज पे प्राइमरी फोकस लेके आओ. इट्स लाइक at every moment whatever is happening on the outside, don't look at it from the perspective of somebody who's living through the experiences. Like we usually think that we are just one person, we identify with a name, but we are three people in one body. We are the experiencer, we are the doer, and then we are the energy. So the experiencer is only experiencing life in terms of memories and thoughts, right? And the doer is only experiencing life in terms of actions. And the energy is what is creating those thoughts and then those consequent actions. So first come to the perspective of an experiencer. जो ऑब्जर्वेशन का आपका टूल था, सो जस्ट कीप ऑन ऑब्जर्विंग वट एवर द एक्सपीरियंसर इन यू इज डूइंग एंड वट एवर द लाइक डूअर इन यू इज गोइंग थ्रू, राइट? सो वो ऑब्जर्वेशंस का जब एक बंडल हो जाएगा आपके माइंड स्पेस में, एंड देन यू कैन सी कि आपके एनर्जी के कौन से कंपोनेंट ने वो सारा मैनिफेस्ट किया, राइट? सो जितना हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे विद दिस बॉडी, दैट आई एम दिस बॉडी, आई एम दिस पर्सन, आई एम अ डॉटर और आई एम अ वाइफ, तो ये सारा आपके दिमाग में और वो एक्सपेक्टेशन लेके आएगा. एंड व्हेन यू ब्रिंग योर अटेंशन बैक टू द फैक्ट दैट आई एम नन ऑफ दीज थिंग्स, दीज आर जस्ट स्मॉल कंपोनेंट्स ऑफ माई एंटायर बीइंग. सो इट्स लाइक कि आपके दिन का 1 घंटा खराब हुआ तो इट वोंट बॉदर यू दैट मच एज, मतलब अगर आपको लगे कि 1 घंटा ही पूरा दिन है, so that will bother you a little more. So when you belittle these aspects of yourself which are feeling those emotions, which isn't perfection, because the experiencer has to experience emotions, that is life. The doer has to act, and that is life. But you are none of those, and that's what gives you the power to observe. सो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपने अंदर एक इंटरनल रोल प्ले चलना चाहिए कि ओके, लाइक 3 नेहा आर लुकिंग एट ईच अदर. One is the Neha who's acting out, one is someone who's feeling things, and one is just the energy. And then they talk to each other. And you take on the role of the person who is the Neha and the energies. And you ask, the experiencer, okay, what are you feeling? And the doer, what are you doing? And then you combine that information and then you come to an understanding of which energy you're operating from. So it will be very interesting, like a little party within yourself, and you'll be joyful for no reason. लोगों को लगेगा you have multiple personality disorder, but you'll be having a ball. जितना हम अपने आप को बॉडी से आइडेंटिफाई करेंगे तो उतना ही बॉडी के प्रोग्राम्स कि ओके, माई हेल्थ, my finances, because finances eventually boil down to food and then life, right? So, and then it all stems from the fear of death. Any pursuit for money stems from the fear of death, because that's the first kind of fear that we have, जहाँ से कि बाकी सारे fears they are created. So when death will happen, it won't happen tomorrow, it will happen in that very moment, in the now. किसी को ये नहीं पता होता कि okay, I will die tomorrow. जब मरता है इंसान तो उसी वक्त मरता है, उसी कंडीशन में मरता है विच दे आर इन, विच दे हैवंट प्लान्ड. कोई प्लान करके मरता है, दैट्स डिफरेंट थिंग, बट यूजुअली पीपल डोंट प्लान देयर ओन डेथ. सो इफ यू जस्ट कांट प्लान द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिगेस्ट फियर दैट यू होल्ड, सो व्हाट एल्स कैन यू डू? लाइक दैट्स द मोस्ट बेसिक थिंग. आपको ये भी नहीं पता कि यू विल वेक अप टुमारो मॉर्निंग और नॉट. So live every moment as if it is the life that you're living. ऐसे आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं, because आगे का जो भी है that's coming to us from the perspective of imagination. कि okay, this has happened to me in the past, hence this will be repeated in the future. And whatever is haunting us from the past, it's from memories. कि okay, this is what information I've stored from what has happened in the past, and hence I should be prepared for certain scenarios. So these play in perfect combination, memory and imagination. And that creates all kinds of emotions in us. Anticipation, worry, fear, anxiety, and lots more. But when you're in the moment of now,
In that very moment, whatever you're feeling, that is your entire scope of observation. And if it's triggering something which happened in the past, okay, like something happened in the now, like आपको कहीं से ये experience हुआ कि okay, not having a job has impacted me in this moment somehow, right? Let's say I want to buy some expensive tickets to a vacation, but I don't have the money. तो एकदम से वहाँ से ना दिमाग कनेक्शन बनाता है, ओके जॉब होता तो मैं कर सकती ये वो. So in the now, the trigger then brings back the memory and then it creates an emotion. So trigger, memory and emotion, इन तीन चीज़ों को set aside करके you just have to look at them. You know, हम इतने पावरफुल हैं कि the moment we look at what we are feeling or what we are thinking, उसी moment वो dissolve हो जाता है. You know, शिवा का वो कहते हैं ना third eye होता है जिससे कि he can destroy everything. So that actually is a metaphor for this very fact that when you look at everything without judgment and from a clearer perspective, तो वो automatically it gets destroyed, right? So हम सबके पास वो power है, and it's not to destroy something on the outside, but अपने अंदर कुछ destroy करना है, so that you become more and more empty. And you know, the more you become empty, see, there's limited space in your energy. Although it may be unlimited, but still, it can contain only a certain number of things in this planet, right? So, अगर आपके एनर्जी में एंगर, फियर, वरी ये सारा भरा हुआ है, तो देयर इज नो स्पेस फॉर जॉय, तो ऑटोमेटिकली वो कम रहेगा. बट हमारी नेचुरल टेंडेंसी है कि जैसे ही दैट थिंग गोज डाउन, इट विल ऑटोमेटिकली फिल अप विद जॉय. सो ये सारा काम है आप पे. यू जस्ट नीड टू ऑब्जर्व. लिखने का कोई प्रेशर नहीं है. इफ यू आरंट एबल टू राइट, सिंपली रिकॉर्ड. And major thing is that you need to observe, because I tell you, observation से ना मेरा personally बहुत काम ऐसा हो गया है which I just couldn't do if I was sitting with a pen and paper. No, that narrative is constantly going on in your head. Like हम दुनिया को ऐसे देखते हैं ना कि ओके ये हुआ मेरे साथ, एंड देन हम देखते भी नहीं हैं. हम वी जस्ट गो थ्रू लाइफ, राइट? बट व्हेन यू ऑपरेटिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यू जस्ट नॉट गोइंग थ्रू लाइफ. आप एक स्टेप पीछे चल रहे हो फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग ऑन द आउटसाइड. अपने आप को थोड़ा डिस्टेंट करके चल रहे हो, तो यू कैन सी क्लियरली कि ओके ये हो रहा है. एंड यू डोंट हैव टू क्लोज योर आइज और यू डोंट हैव टू मेक अ कॉन्शियस एफर्ट. लेट्स से मेरा भी एक पहले क्वेश्चन था कि आई एम इन द मिडल ऑफ अ फाइट, आई एम इन द मिडल ऑफ अ कॉन्वर्सेशन. वहाँ पे कैसे मैं एकदम से आई जस्ट स्टॉप एंड स्टार्ट ऑब्जर्विंग, राइट? सो ऐसे होता गया कि इवन व्हेन आई एम वर्बली फाइटिंग विद समवन और हैविंग अ कॉन्फ्लिक्ट, तो दिमाग में आई एम कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्विंग कि ओके दिस इज हैपनिंग ऑन द आउटसाइड एंड व्हाट एम आई फीलिंग. तो यू नो मिड फाइट ही वो ख़त्म हो जाता है, बिकॉज आपकी एनर्जीज ही सामने वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है. अगर कोई आपको ट्रिगर कर रहा है एंड आपने अपने आप अंदर से ही वो एनर्जी हटा दिया उसी मोमेंट में बस देख के, सो वो सिचुएशन उसी वक्त रिजॉल्व हो जाता है. इवन यू नो, जैसे हमें बुखार आता है तो हम कोई मेडिसिन खाते हैं, टेक सम टाइम टू एक्ट ऑन अस. तो दिस इज नॉट लाइक दैट. दिस इज हैपनिंग एवरी सेकेंड. मतलब सेकंड का ही काम है कि द वेरी सेकंड यू ऑब्जर्व एंड यू हैव एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि ओके ये मैंने देख लिया एंड उसको एक्सेप्ट कर लिया, दैट्स इट.